Hello Sumit again. A very good evening. Thank you. And congratulations for the show. Thank you. Mouni, before we start with you, much appreciate कि आपने ये cause को चुना and you took the initiative to present this show and also with Mouni. क्या प्रेरणा थी, what was the inspiration and why you thought about it?
color? Yeah, of course. Okay, so obviously I feel this is something that the collection basically, if you saw, was segregated in two. The dark time for gay men and women where we had to be hidden. We were always scared of the cops attacking, someone knocking on the door. And then of course Article 377 being dissolved completely. And then the burst of color which represents freedom and happiness and we can finally be who we want to be. So that was the color. And then now we are all at peace. That's where the white comes in, which is the only comes in. और मेरे ख्याल मौनी से अच्छा कोई हो नहीं सकता था आपके लिए पुस्तक करने के लिए. You know, I was really hoping that she was free because she really represents my brand. She's someone who's worked so hard and she's doing such amazing work now. So I'm really glad that I got her. Fine. I am the one who's honored to be working for him, and I'm really glad I got that call to walk on his show, and for such a brilliant cause, and so well done, so well put up. Everybody, all the models were so good, all the clothes were so beautiful. So yeah, I just happen to be a tiny piece of this perfect puzzle. मौनी हमें जहाँ तक मतलब जितनी हमें ज्ञान है उतना है. जी. पहली बार आपको मतलब रैंप पे अपनी शोभा बढ़ाई और आप जी जी जी. ये इतना लंबा समय आजकल बोलने को कहाँ मिलता है कि पहली बार कोई चीज़ किया है. इतना समय इसलिए लिया है क्योंकि जैसे आपने देखा, मैंने टीवी से फिल्म में आने के लिए भी काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इनसे ज़्यादा सही और कौन हो सकता है. सो या, so when the time was right, he called, I decided to. That was so sweet. ये बताएंगे, इनका है, ये बेटर बता पाएंगे. So basic inspiration, wings से था. Wings represent freedom. It represents flying. हम उड़ रहे हैं. Sexuality is not just about being behind doors now. उड़ सकते हैं जहाँ चाहे. So nevertheless, the inspiration was from the wings of a pigeon, and that's why. वेल वाइट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है, और इस शो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज इट सिम्बलाइजेस पीस, एक्सेप्टेंस, the freedom to have the courage to live like who you want to be. So yeah, that's all about it. आप डांस करते हुए, एक्टिंग करते हुए तो कॉन्फिडेंट रहती हैं और आपने जो फिल्म की अभी उसमें भी आपने बेहतरीन काम किया. इतने कॉन्फिडेंस सॉ द फिल्म. Yes. ब्रिलियंट शी वाज. तो इस पे चलने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस में थे. बहुत नर्वस थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस But थी. she wanted to rehearse. She was like, dress rehearsal करते हैं, but we didn't get the time. So she did it without any rehearsal. बनाते वापस से क्यों लो और वापस से बोलो मुझे कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस थी, प्रे कर रही थी फिंगर्स क्रॉस करके कि बस ठीक से हो जाए, और हो गया. थैंक यू. आप जैसे ब्रह्मास्त्र भी करें, उसके अलावा मेड इन इंडिया भी करते हैं. मेड इन चाइना भी करने वाले कंपनी का भी करते हैं हम. राजकुमार जी ने कहा है कि बहुत ही एक्साइटेड है और स्पेशली गोल मूवी आपकी देखी है, बहुत लाइक. आपका रिएक्शन है तो कितना एक्साइटेड आप था? बहुत ज़्यादा. आई थिंक इट्स बाय फार वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सेट्स दैट आई हैव बीन ऑन. It was an enriching experience working with the entire cast and crew. Rajkumar is brilliant. He is such a superlative actor. आप वो literally आपको बता, I mean, somebody will tell you you're doing right or wrong. He tells you how to do it. So that is something, and I learned a lot on this set. So I'm very thankful. आपने ये इनिशिएटिव अच्छा लिया कि आपने 377 को आपने चुना. मी टू मूवमेंट के लिए आप सोचेंगे कुछ करने के लिए? Of course, actually, I feel it's very important to understand that it's not just women, men also go through it, and they have to accept it and also come out. You can't be ashamed of it. It's something that is to be tackled seriously. And not just the industry, you know, I It's genuinely anywhere. feel that little children Yes. or boys and little girls in our neighborhoods, sometimes in families, they go through so much. They go through some or the other form of harassment, and they can't talk about it. So this is all about that, and I just hope and pray that, you know, sometimes it catches momentum in our country, but unfortunately it loses its strength, and it's pace, very important yeah. at such times everyone sticks together and sort of takes action. You have to go to the court of law. उन्हें अब आप तीन इंडस्ट्री का पार्ट है, फैशन, टीवी, फिल्म्स, डांस, सबका. जी. आपको ये
बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा है. हाई टाइम. अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए. वो तभी हो सकता है जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें और प्रेजेंट की बातें बोलें, क्योंकि इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो इतने साल पुराने हैं कि देर इज़ नो प्रूफ और एविडेंस लेफ्ट. So I think as women or men, whoever is going through any kind of harassment should come out in the open and talk about it, because that's very important. It's disturbing. It's traumatizing, the kind of news I've been reading. बहुत अच्छी बात है मोनी. इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कई लोग हैं, जैसे अक्षय कुमार हैं, आमिर खान हैं, इन लोगों ने आगे बढ़ के आया है और कई प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर किया है. जी. ये इसको आप कैसे देखती हो? I think they're doing the right thing. Yep. They're doing the right thing, and Also, they I should feel, be. if I may interrupt, it's very important to understand that they are humans and they have the right to make individual decisions And choices. and Yeah. choices to start talking and start supporting at a specific time, because their careers at stake. They also have a family, so they will come out. Everyone will talk about it at the right time. क्या होता है, प्रेशर इतना करते हैं कि इसने क्यों नहीं बोला, उसने क्यों नहीं बोला. They will all talk when the time is right. अक्षय आपके पोस्टर रह चुके जी. हैं, उन्होंने ये कदम आज ही उठाया. जी, मैंने पढ़ा. And I thought he did the right thing. Yes. एक चीज लास्ट है, सीनियर एक्ट्रेसेस जैसे रेणुका शाहने वगैरह भी अब खुल के आ रही हैं और अपना पोस्ट रखी है. ये भी एक सराहनीय चीज़ है. आपको बहुत ज़्यादा. आई थिंक ईव टीजिंग हम सबके साथ हुई है. एज ए चाइल्ड I have studied in Delhi. I have been petrified every evening that I have walked out on streets. This is something that I have personally experienced, the fear of walking out and being eve teased or being looked at badly. And it takes, and I used to be a person who used to be so scared to talk about it, because हमारी society unfortunately ऐसी है कि वो उंगली लड़कियों पे ही उठाते हैं. तो जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है when you actually talk about an episode, such an episode of your life and out in public, when she must have given it out to you. You could have judged her, somebody could have shamed her, but she did not worry about it. So जी, बहुत सराहनीय है. थैंक यू सो मच. Thank you. आपके स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, हम लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं कि आपके विजडम के जो वर्ड्स रहते हैं. थैंक यू. एंड probably you are supporting everyone, every woman out there. Yes, I am. And men. And men. Yeah. Thank you so much. Thank you. Picture here together and then